Everybody, good evening. I'm Akash from Ministry of Films, and today we have with us Navjot Gulati, who's the writer of RunningShadi.com and the recently dropped Ginny, Weds, which dropped on Netflix just yesterday. And he also directed a film named Jai Mammi Di, which came out when theaters were open earlier this year. And we are discussing with him films which include weddings, and it's not just about marriages, right? But in India, I think weddings are a different genre in itself, especially because we are coming from a place where in 90s the biggest of hits were actually wedding films, and we'll be discussing the, how that's dealt with. So we're just waiting for him, and as he's here, we'll get him in, and we'll have a conversation about that. So I think there's some delay. Okay, he's here. He's here. Hi Navjot. Hi. Hi, Can hi. you? Can you see me? Yeah, I can see you. No. So first, I first let can't me see start. myself, but Oh, for you can some reason. now. Can you? Uh, no, I can't still for I some have no reason. idea. You're perfectly visible and audible, and I hope it's the same for everybody who's watching, and I hope it becomes the same for you also. Just try. Okay, just. What should I Uh, do? I think you wanna try leaving and coming back again. You wanna try Huh, that? I'll do that. I'll do that. I'll do. Okay. So yeah. Sorry. We're just waiting for him to join again, and we'll start the conversation right away. Okay. Thank you to everybody wishing me. Kind of awkward. Yes. You. Hi. Hello. Hi, Uh, hi. I still can't see myself. That's does funny. that does that work? Is it okay? Matlab, it's okay for me as long as you can see me and people can see me, I Yeah, guess. everybody's commented that they can see you and you're perfectly visible and audible to me. So I want to start off by congratulating you for the release and the reception of your film, which dropped yesterday, Ginny Wed Sunny. Thank you. And Thank you. I have to confess, I haven't really got the time to watch it yet. I'll be watching it as soon as possible. But I love the trailer, and Thank you. I've seen your previous two films. I want to start off by asking you this. I tried researching this, and it's not the easiest thing to find. But are you married? Because we are talking about wedding films, so I want to start off with that. No, I am still not married, thankfully. So then, how does the wedding films genre come into your films so easily every time? See, to be honest, none of this was planned. It was not like I decided in one fine day, I woke up and I said that I will only make films about weddings. There was no such decision. It just so happened that I have been writing for so long now and I have written so many scripts. These are the three scripts which got picked up. So Right. the fact that I made sort of a wedding trilogy says a lot about the system than me. It's like Yeah. people want to see those films, so I can't help it. Correct. It makes sense. Because yeah, earlier the wedding film used to work more than anything else, right? Like I was thinking about this, the two biggest hits of the 90s, which are Dilwale Dulhaniya Le Jayenge and Hum Aapke Hai Kaun, both are essentially wedding films, right? Half of the films are based in weddings, and now that you've been doing the same, do you think that innovation is necessary? Do you think it's a subgenre in itself? Firstly. Now it is, and this is the last of me doing something like this for this lifetime. Like somebody was asking me the other day, the only point I'll probably do a wedding film when it's a serial killer wedding.
So if a serial killer is let loose in a wedding, a destination wedding, then I'll do it. Otherwise, I am done with this genre. A lot of people have liked, disliked, enjoyed all these three films in various different ways. Right. But I am definitely done. And also, what 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 a lot of people probably should know, that these are all films that were written long ago. Okay. These were all written around 2013 and 14. Oh, that's The yeah. realization of the scripts is so long, it takes so many things to fall into place for you to be able to make a film, that Right. you can never predict when it will come out. Hmm. Right. So It's. at this point, I Hmm. have vowed never to do a film which is related to weddings. And whatever I do next will be a complete departure from what I've done till now, and not because I cannot do it, it's because I am only tired of Right. using the same tropes, because there is very limited that you can do with this thing. अभी हो गया है ये, मतलब saturation हो गया है मेरा, thankfully. Hmm. So Hmm. a lot of my friends will be really happy who want me to do something else. But all I can tell them is थोड़ा रुक जाओ, कोशिश जारी है. Because and it's very interesting that all these films are very different from each other, right? Although I haven't seen Ginny Weds Sunny, I have an idea of all that it is about. Like with the trailer, you get an idea of the plot, and I've seen the earlier two films, and in Jai Mummy Di, the wedding plot came into it. Although the wedding was always happening from the beginning, the wedding was actually only towards the end and everything. While in RunningShadi.com, it was all weddings. So I want to talk about like what about the wedding scene, right? What do you think needs to be done in that scene? Because it was very interesting to me that in Jai Mamidi it was actually not the open hall and the kind visually it wasn't the same kind of a wedding that we're used to always seeing. So what do you have to talk about that scene? No, see, the thing is that you make certain choices in terms of aesthetic, and you try to be different from what you have seen and what you have done before. Hmm. So that is something I am very conscious when I'm directing. But when Hmm. I'm just writing, then it is the vision of the directors. In the case Hmm. of Running Shadi, Amit Roy, and in the case of Ginny Vetsani, Puneet Khanna, it's all them. So they are the one taking those calls. I am just writing the scenes and hoping that they shoot them well. Right. So that you said that it takes so much time to materialize. So how much changes in the process? यार स्क्रिप्ट भी ना, जैसे क्या, राइटर और स्क्रिप्ट ना दोनों एक साथ इवॉल्व करते रहते हैं बनते बनते. Hmm. Hmm. It's almost like a relationship which two friends share, or a girlfriend or a boyfriend share. वो हर रिश्ता वक्त के साथ बदलता रहता है और बदलता रहता है, बिल्कुल. बढ़ता भी है और बदलता भी है. तो वही चीज स्क्रिप्ट के साथ भी होती है. सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि आपने फिल्म बना ली है और Hmm. टाइम इतना हो गया है जब आपने लिखी थी बनने और रिलीज होने में, कि आपने ही उन कैरेक्टर्स को आउटग्रो कर दिया. Okay. सो Yeah. वेन एवर आई सी एनी वर्क दैट आई हैव डन, मेरे लिए वो नॉस्टैल्जिया से ज्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ. हाँ, correct. Till it's also abhi the film came out yesterday. I'm talking about Ginny Wets and it came out yesterday. And with all the reception coming in, I want to know कि कितना फर्क रहता है. Like जब भी थिएटर में आती है, तो फिर there's this pressure of first दिन पे इतने लोगों को देखनी रहती है. अभी कुछ collections बाहर नहीं आएंगे, right? मुझे Which might. मुझे तो सबसे ज्यादा बुरा मेरे ट्रेड वाले भाइयों के लिए लगता है, जिनका जिंदगी में बस काम ही है कि डे 1, डे 2, डे 3 में अगर फिल्म चल जाए तो उनकी बढ़ाई करना, अगर ना चले तो उनको गालियां देना. उनका काम खत्म हो गया है. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. फिल्म जैसी है अपने मेरिट पे जज होगी. देखो, हर फिल्म सब्जेक्टिव होती है. किसी बिल्कुल. को कोई एक फिल्म कमाल लग सकती है, किसी को बकवास भी लग सकती है. जो लोग बनाते हैं उनको पता होता है कि फिल्म कितना वर्क करी है. और मेरा Hmm. मानना ये है कि कोई भी फिल्म का अगर रेशियो 60-40 है ना, वेयर 60% पीपल हैव लाइक द फिल्म एंड 40 हैव नॉट लाइक्ड इट, दैट मीन्स इट हैज वर्क. सो वो रेशियो तो आप अपने इको चैम्बर में ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, और हर फिल्म में वो अलग होता है. And but इसके अंदर there is also this trust के
लॉन्जेटिविटी है वहां पर, पता है कि वहां पर रहेगी फिल्म, थिएटर से एक हफ्ते में निकल नहीं जाएगी, क्योंकि वैसे इसके अंदर वैसा नहीं रहेगा कि थिएटर के जैसे एक हफ्ते के बाद देयर वोंट बी एनी लाइफ इसकी, बिकॉज आई हैव हर्ड दैट सो मेनी ऑफ दीज फिल्म्स एक महीने बाद ऑल्सो पीपल आर लाइक अच्छा नाउ इट गॉट डिस्कवर्ड। सो हाँ मतलब डिस्कवरी तो चलती रहेगी ना यार, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप because it's there for perpetuity. But then people do a lot of funny things in that. Just recently, some platform celebrated 100 days of a film on their platform, and I'm like, भाई अभी तो जीवन भर ही रहने वाली है ना, तुमने तो perpetuity में खरीदी है, उसके क्यों 100 दिन मना रहे हो? वो भी हाँ नहीं लोग होना चाहिए. That is the funny करना लाइक, aspect of things like these. हाँ अभी तो लोग लाइक इवन लाइक यू स्पोक अबाउट दीज ट्रेड एक्सपर्ट्स, I've read tweets and all of people talking about how according to our sources इतने व्यूज आए हैं इन द फर्स्ट 24 hours। अब एंड कुछ तो करेंगे ना यार, नहीं तो कोविड के नंबर्स अपडेट करेंगे. दे तो लिव ऑन एंड बाय नंबर्स ना, व्हाट कैन यू से, उनका राइट, काम है ये. makes sense. I also want to talk about के in these three films, right? ये तीनों के तीनों फिल्म के अंदर what do you think, like इसके बाद में what kind of a are you looking at a change of genre or what exactly are you looking at? You spoke about it कि कुछ अलग करना है, but कुछ अलग सोचा है कि क्या exactly करना ऑलरेडी लिखा हुआ है यार, लोग पैसे दे दे तो बना लूंगा, मतलब ऐसा है. I है? have right Because now got 3 scripts which are ready and I'm trying to set them up. One is a teenage dramedy and one is a family drama, and then the third one is a courtroom drama. oh, that's damn interesting. With all three of these being so different from हाँ, anything you've done, एंड but also तीनों में कोई भी कैरेक्टर शादी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी That's नहीं. फंक्शन भी नहीं है शादी का. and there are different like I think marriage films बहुत बनती है अभी, right? Wedding films नहीं बनती है because I to look at it other than Band Baja Barat and the three films that you've done, I tried looking up, वेडिंग फिल्म्स नहीं होती है, मैरिज फिल्म्स बहुत सारी होती है कि मैरिज के अंदर ये हाँ झगड़ा हो गया या कुछ, तो डू यू वांट टू एक्सप्लोर दैट कि ये वेडिंग के बाद होता क्या है? वुडंट दैट यार, बी उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ, वो अगले साल मान जाए, मैं कर लूं और मैं उसको भुगत लूं, उसके बाद बनाऊंगा. सो एवरीथिंग रेस्ट ऑन दैट पर्सन, टू बी ऑनेस्ट. तो शादी के बाद की कहानी तभी बनेगी जब मैं जी लूंगा, उससे पहले तो नहीं बनने वाली. ओके, And then somebody has a question. So they are asking a movie I have liked. बहुत कम लोग हैं, किसी ने तो कुछ पूछ लिया. तो I think the film that I really liked watching this year and I really enjoyed has to be Loot Case. oh, Loot Case worked for you. With all the films that dropped, you enjoyed Loot Case the most out of all of those? No, I enjoyed others also, but that is something that I really liked. I liked Bulbul also, but the Loot Case is something I really enjoyed. क्योंकि उस जॉनर की फिल्में बनना बंद हो गई हैं, तो इट वाज अ रिलीफ. हाँ, राइट, बिकॉज राइट और जब कॉमेडीज से ओटीटी एरा शुरू हुआ है, कोई ऐसी फिल्म तो बनी नहीं है जो आप बोलो ओ माय गॉड क्या फिल्म है. मेरी खुद की नहीं है यार ऐसी, तो मैं किसी और को क्या बोलूं. that's तो I've also like I went through your Instagram and you're very self-critical, right? क्योंकि you're talking about your previous film and you're like ठीक है मुझे भी नहीं अच्छी लगती है मुझे पता है. हाँ And ठीक है ना, मतलब अगर मैं ही अपना काम जो है मान लूंगा कि वर्ल्ड बेस्ट है, तो मैं ग्रो कैसे करूं. मेरा but मानना ये है कि yeah, आप एक चीज बनाते हो और उसके बाद आप उससे आगे बढ़ जाते हो, लोग तारीफ करते रहते हैं, खिंचाई भी करते रहते हैं, वो ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से रिएक्ट करता है, बट आपको पता होना चाहिए कि चीज बेटर हो सकती थी. एंड आई फील दैट इवन इफ आई मेक अ फिल्म विच विल बी वाइडली क्रिटिकली अक्लेम्ड और सुपर हिट भी हो जाएगी जैसे मेरे दोस्त बनाते हैं, उसके बावजूद भी मैं अपनी फिल्म में खामी ही ढूंढूंगा और बोलूंगा बेटर हो सकती थी. correct, बिकॉज but मैंने तो इतने साल में यही सीखा है कि जब आप मान लेते हो ना कि आपको सब कुछ आता है, तो आप सीखना छोड़ देते हो. बट इसके मेहनत लगती है ये करने के अंदर, खुद के काम को क्रिटिसाइज करने में. कभी खुद के ऊपर सेल्फ डाउट आता है जब आप अगली बार लिख रहे हो
seeing the reception के इसको लोगों ने, like for example there has been, like your previous film, there were some critics who were pretty harsh also. So does that instill self doubt in you when you're writing? I remember a great filmmaker told me many years ago that self-doubt is the greatest asset to have as a writer. Because self-doubt will always make you go back and reread the scene and feel and think whether it is working or not. So self-doubt is great and I have it every day. मैं तो रोज सुबह उठता हूँ, मुझे ये भी self-doubt होता है कि नाश्ते में आज अंडे खाऊं या पराठे खाऊं, कि क्या मुझे अंडे पसंद है या मुझे पराठे पसंद है. तो सेल्फ डाउट तो ग्रेट है यार. इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट, ये सब तो गहना होता है हम लोगों का. जब चला जाएगा तो हमारी हस्ती बदल जाएगी. And I want to talk about how you've spoken about the credit system of OTT a lot. I checked out your Twitter and Is it your birthday today? Somebody is wishing you happy birthday. Yeah, it's my birthday. अरे कमाल है यार, हैप्पी बर्थडे, मुझे बताया ही नहीं तुमने. Thank you so much, thank you. Yeah, that's why आज शर्ट पहन लिया मैंने. इसके पहले सारे के सारे लाइव में टी शर्ट पहना था. आज बोला बर्थडे तो आज शर्ट पहन लिया. अच्छी बात है. हाँ, you were asking. हाँ, तो मुझे ये पूछना था, you've spoken a lot about the credit system in OTT. So with that, because of yours and a lot of people's tweets, I see that changing with a trailer which came out, I think today. There were credits in a trailer which came out today. Yeah. उसका credit जाता Bijoy को, because he has been fighting that battle with me and a lot of other people who keep tweeting and hoping and that these platforms are shamed into doing it, because और तो कोई तरीका है नहीं. मतलब प्लेटफॉर्म वाले गवर्नमेंट की तरह आपको डिसेंट दिखानी पड़ेगी, एक दिन आंख में शर्म आएगी और ये मान जाएंगे, और कोई तरीका है ही नहीं. So you have to keep saying the right things there and hope that people agree eventually. There is no other way. और मेरा मानना है यार कि वो तो एक बेसिक है, for people to be credited for their work and for people to know after seeing the trailer कि फिल्म किसने बनाई है, वो तो बेसिक है ना. अब कुछ ज्यादा तो मांग नहीं लिया, प्रोड्यूसर से पैसे थोड़ी ना मांग रहा है राइटर या क्रू कि हमें हमारे मेहनताने से ज्यादा दे दो. अपना नाम ही तो देखना चाहते हैं, उसमें क्या गलत है. तो जिसने भी ये सिस्टम बनाया है, वो इंसान या वो एंटिटी जो है, दे रियली नीड टू लुक विद इन दैट व्हाट दे आर डूइंग is it right or is it wrong. And even if they change their stance, is it going to harm anyone? No, it's not going to harm anyone, right? No, it is only आप, मैं तो बोल रहा हूँ आप सिंपल लॉजिक रखो. अगर जितने लोगों का नाम डालोगे आप ट्रेलर में, उतना ज्यादा क्रू के लोग जो हैं वो आपका ट्रेलर शेयर करेंगे, क्योंकि अपना नाम देखना सबको अच्छा लगता है यार. नोबडी इज गोइंग टू डिसलाइक सीइंग देयर नेम ना. So how is it harming anyone? And I keep having this argument with a lot of people. None of them have been able to give me a reason as to why it is happening. I just feel it is stupid. Stupidity has no logic. It just exists because it can. 100%, 100%. I want to talk about how in the recently released film in Ginny, Weds, there is a song जिसका there was a lot of conversation कि ये गाना दो फिल्मों में अभी रीमेक हो रहा है and all same ही गाना. तो वो so what did you think about when you got to know? See, I obviously know the entire details as to how and why it happened. हाँ जी. ठीक है, but I can't tell it on record, obviously. हाँ, जितना बोल सकते. But I will say it in the simplest way possible. मिका बाजी की जय हो, वो कुछ भी कर सकते हैं. So उनका जो टैलेंट है वो ऐसा ही है कि वो एक गाना दो लोगों को बेच सकते हैं और उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगी. कभी कभी मैं भी रेडियो पे सुन रहा होता हूँ तो मुझे भी पता नहीं चलता मैं अपनी पिक्चर का सावन सुन रहा हूँ या अबीर की फिल्म का सावन सुन रहा हूँ. तो बट अब ठीक है, आई मीन इट्स 2020, इतना तो हो ही सकता है यार. बिल्कुल. And you are a North Indian, I am, and we've heard a lot of these songs. I'm not just talking about this one, but also the two songs which were redone in Jai Mammi Di. We've heard a lot of these songs earlier. So what do you think about the trend where
like for us, it's not a new song, right? I'm sure even you might have heard those songs earlier, and नहीं, अब like जैसे even यार वो सब्जेक्टिव है. जैसे I for one never thought I'll have a remix in my film or hmm, an so called item song. hmm, बट कभी कभी क्या होता है यार कि आपको जो है अपनी एक बात मनवाने के लिए दूसरी माननी पड़ती है. तो ये जैसे जय मम्मी दी में जो एक गाना था मम्मी नू पसंद, विच इज अ ब्लॉकबस्टर इवन बिफोर हाँ द जी, फिल्म रिलीज. मैंने वो गाना जो है आइडेंटिफाई करा था बिकॉज ऑफ माई ब्रदर. हाँ, उसने रैंडमली मुझे एक दिन बोला कि यार ये गाना क्यों नहीं ले लेता तू अपनी फिल्म में. मैंने कहा अरे पागल है क्या, मैं रिमिक्स नहीं लूंगा. फिर then I realized that my nephew, he loved that song and he used to dance to it like crazy, and he was then just 4 years old. तो मैंने ना गाने के बस लिरिक्स सुने. पहले मैं सिर्फ बीट सुन रहा था बिकॉज वो सब पंजाबी गाने एक जैसे ही रखते हैं. बिल्कुल, मैंने जब वो गाना सुना उसके लिरिक्स ना जेन्युइनली मेरी फिल्म की सिचुएशन से मैच खा गए. हाँ, करेक्ट, So I sent that song to my producer. My producer sent it to T Series. Everybody was on board to buy it. And if people can criticize the song or the fact that एक और remix वो जो YouTube पे comment करने वाले लोग होते हैं, बट मैं उनको बस ये कहना चाहूंगा, ये देख लो भैया उस पिक्चर में गाना जो है इंटीग्रेट करा गया है फिल्म के अंदर. वो बिल्कुल, रैंडमली नहीं आ रहा. इवन इवन इन गिनी वेड्स सनी, मी एंड सुमित, हम लोगों ने वी रोट अ सीन टू इंटीग्रेट द कॉन्सर्ट. ठीक है, वो एक्चुअल दैट इज अ प्लॉट डिवाइस कि लड़की को, गिन्नी को पसंद है बादशाह के गाने और वो उसके कॉन्सर्ट पे जाना चाहती है. इट इज यूज एज अ प्लॉट डिवाइस. राइट, एंड वी आर डूइंग इट इन द वेन कि यार देखो प्रोड्यूसर तो बोलेगा ही कि एक गाना ऐसा डाल दो, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो स्क्रीन प्ले में आ जाए. हाँ मतलब पोस्ट So क्रेडिट से the बेटर है. point is that you find your way around the system na, rather than cribbing about it. So that is all that we are trying. और मुझे लगता है कि सावन का जो रीमिक्स है, जो भी नया वर्जन है, that is actually very well produced and it has got great reception. 100%, So it's not that bad after all. ना probably जो लोग ऐसा गाली देते हैं, they need to understand that they should be against bad remixes, करेक्ट, but not the ones that are good. क्योंकि सिंपल लॉजिक है, जब भी कोई पुराना गाना वापस आता है ना, ठीक है, वो आपको पुराने पे वापस भी लेकर जाता है. आप उसको और सुनते हो. जैसे मसक कली का रीमिक्स पकौल था ऑब्वियसली, बट उसकी वजह से मसक कली ओरिजिनल कितने लोगों ने वापस जाके सुना. राइट, अब आप अगर उस लिहाज से देखो, हाउ विल द न्यू जनरेशन डिस्कवर द ओल्ड थिंग. और गलत क्या है उसमें यार, अगर किसी को लग रहा है कि उससे उन्हें फायदा हो रहा है, हाँ मैं बोलता हूँ आउटरीच करो. इफ इट इज अ बैड रीमिक्स, यू शुड नॉट स्पॉइल द सॉन्ग. गलत शायद हाँ क्वांटिटी लगती है कि हाँ, इतने ज्यादा. क्वांटिटी तो गलत है, बट यार अब अगेन वो तो सब म्यूजिक कंपनीज महान है हमारे शहर की, उनका तो कुछ कर नहीं सकते आप. सी इट्स अ पहले अंडा आया या पहले मुर्गा आया वाला सिचुएशन. वो लोग बोलते हैं पब्लिक देखना चाहती है, पब्लिक बोलती है वो हमें दिखा रहे हैं. जिस दिन पब्लिक देखना बंद कर देगी वो बनाना बंद कर देंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. बिल्कुल, हाँ. अदरवाइज लाइक द probably the most viewed song of this country is actually a remix, right? It is, I checked it out and YouTube says आँख हमारे is the most viewed song. तो फिर हाँ पब्लिक भी है, करेक्ट, पब्लिक इज एज हाँ, तो रिस्पॉन्सिबल. वही है ना. सी अब वही बात है ना, लोग सरकार को गाली देते रहते हैं और बोलते हैं कि कुछ काम नहीं होता. जब लोग सवाल उठाना बंद नहीं करेंगे और गलत की जगह सही गवर्नमेंट चुनेंगे तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा ना. आप जो है रीमिक्स गाने देखना बंद कर दो और लोग जो है बनाना बंद कर देंगे. तो और अब तो वैसे भी यार जब ये ओटीटी वाले ईरा में, आई डोंट थिंक कि इसका उतना रेलेवेंस है जितना थिएटर में था. क्योंकि थिएटर में आने के लिए जो है, my friend is here who's saying she's my big fan but she's not, I know. So ये सब जो है बोलने वाली बातें हैं. Everything at the end of it is a call taken by the people making the film. उनको जो अपने लिए सही लगता है वो करते हैं. But yeah, given a choice in future, will I use it? Probably no. But if I use it, I'll use it in a smarter way if I can. Right. It should look a part of that world of that film.
It shouldn't look कि यार ये जबरदस्ती ठूसा गया है. मुझे ये भी पूछना था कि आप इतने समय से बॉम्बे में हो एंड देयर आर अ लॉट ऑफ friends of yours who are also doing great work, right? तो कभी भी when say a film of yours comes out and the reception is mixed or not in the best way possible, क्या कभी भी ईर्ष्या होती है? हाँ बिल्कुल यार, होनी भी चाहिए ना, बिकॉज जेलेसी जो है वो तो कहना है ना आर्टिस्ट का. I will feel jealous one day, I will be okay the next day, then I will go back to see कि मैं क्या better कर सकता हूँ. It will only inspire me ना. See, anybody tells you that they don't feel bad when a friend of theirs does great, they are lying. मतलब आप वो 3 Idiots वाला सीन याद कर लो, रैंचो, और जब रैंचो फर्स्ट आता है तो उन दोनों को कैसा फील होता है. इट्स ओके, बट दे आर स्टिल फ्रेंड्स ना. फिर भी माधवन और शर्मन जोशी उसको ढूंढने जा रहे हैं ना. बिल्कुल. तो वही होता है यार. दैट्स हाउ इट वर्क्स. Yeah, I want to finally. And I just hope that कि I reach a place where people are jealous of me. हाँ, बिल्कुल, of course. That's what everyone Hi, wants. Deepak. So finally, I also want to ask, with so much work and all which is also pending, what exactly, like इसमें से how much of it do you want to direct, right? As a writer who's also a director, do you want to direct it all, or what kind of possession is there involved? यार to be honest, अब मुझे ना कोई राइटिंग के लिए फोन करता ही नहीं. ठीक है, मुझे सिर्फ फोन आते हैं डायरेक्ट करने के लिए. मैं तो चाहता हूँ कि लोग मुझे फोन करें कि भैया डायरेक्ट करो, और फिर मैं मना करूं, मतलब लिखने के लिए बोले और मैं मना करूं, और या मैं फिर ऐसे फिल्म मेकर के साथ लिखूं जिसका मैं फैन हूं. ठीक है, अदरवाइज अब मुझे नहीं लिखना. अभी मेरा खाली राइटिंग हो गया है. मतलब जैसे मैंने बहुत साल पहले इम्तियाज सर को बोला था कि सर आप बोलोगे तो मैं लिखूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ एक दिन आप मुझे फोन करो कि तू मेरे साथ लिख. बट वो भी मेरी तरह जिद्दी है, वो भी अकेले लिखते हैं, मैं भी अकेले लिखता हूँ. तो कभी ना कभी तो वो मिलन हो जाए तो लाइफ बन जाएगी. So, कौन है? इम्तियाज सर है और डायरेक्टर्स है whom you are a huge fan of, whom you respect a lot. I am in the current lot. जो लोग अभी एक्टिव हैं और अच्छी फिल्में बना रहे हैं, I really like. मतलब यार अब वही है, अब सबका इतना टाइम आया हुआ, अच्छी फिल्म हो गई है ना, नए फेवरेट्स बनना बड़ा मुश्किल होते हैं. बट वन डायरेक्टर विच आई लव द मोस्ट एंड आई फील कि यार ये है जो सिनेमा बना रही है, वो है जोया अख्तर. बिकॉज जोया इज समवन, ठीक है, शी गेट्स ऑल द प्रिविलेज इन द वर्ल्ड एंड ऑल द एक्सेस, बट व्हाट शी डज विद इट इज जस्ट इनक्रेडिबल. अमेजिंग. मतलब गली बॉय ऐसी फिल्म है कि मैंने जितनी बार देखी है मेरे को गूज़बम्प्स आते हैं, क्योंकि शी जस्ट गेट्स एवरीथिंग राइट. She just gets everything right. उस लेवल का इस समय I don't think there is another filmmaker which I can say कि हाँ यार ये है जो काम कर रहा है. And she gets it right यार. I hope that one day I can make a film जो इतनी अच्छी होगी जोया अख्तर मुझे फोन करके बोले क्या पिक्चर बनाएंगे. Right. And और मुझे मालूम है कि सब लोग यहाँ पे सब चीज देखते हैं, पर फोन तभी करते हैं जब उनको कुछ कमाल लगता है. तो हमारी आधी जिंदगी तो वो फोन के वेट में ही होती है कि कब कोई अपने आसपास का फोन करके तारीफ कर दे कि हाँ यार कुछ तो अच्छा करा तुमने. देखो ऑडियंस तो हर टाइप की चीज को पसंद करती है. ठीक है, हर जो वो कहते हैं ना क्लीशे है कि हर कहानी का ऑडियंस है. बिल्कुल. बट फॉर फिल्म मेकर्स व्हाट रियली मैटर्स इज दैट अप्रिसिएशन कमिंग फ्रॉम देयर पीयर्स. राइट. तो और आपका ग्रामर बहुत ही वैरिड है, राइट? आई हैव सीन यू अ फ्यू टाइम्स, क्वाइट अ फ्यू टाइम्स ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स एट मामी, watching films with your friends, and now I've also seen you appreciate a lot of films from different countries and all, like on social media. तो अभी do you, like is your grammar and your filmmaking, both of them haven't been the exact same in terms of at least like what I've seen at festivals and so do you want to adopt that grammar? यार देखो क्या है, मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करी है, ठीक है, जिसमें लो लाइट है, सोशल मैसेजिंग है,
ठीक है, और उसमें भुक्का नंगा इंडिया दिखा रहे हैं, ठीक है, वो फिल्म फेस्टिवल में बहुत अच्छा करेगी और वो बाय चॉइस है। बट क्या मैं ऐसी फिल्म खुद डायरेक्ट करना चाहूंगा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि यार मैं जिंदगी को ना बहुत हंसते खेलते नजरिए से देखता हूँ, बट क्या मैं किसी के दुख से रिलेट नहीं करूंगा? मैं करूंगा ना, बिल्कुल। तो जब मैं एज एन ऑडियंस देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है, सो आई कैन अप्रिशिएट। सर लाइक आई सेड दैट इफ टुमारो अगर मैं टीन रोम कॉम में भी लो लाइट कर लूं, ठीक है, और कलर्स डल कर दूं और उसमें लॉन्ग टेक्स रखूं, तो लोग जो फेस्टिवल की फिल्मों पे पागल हो जाते हैं वो उसको भी वैसी तारीफ करेंगे। बट वो एक कॉन्शियस चॉइस है यार कि अभी वो तो नहीं करना है, बट करूंगा कभी ना कभी तो। कभी ना देखो कभी आपकी भी रोम कॉम फिल्म में एक लो लाइट वेडिंग। सिंपल, हाँ करेक्ट, सिंपल लॉजिक है कि आपको ना पैसे मिलते रहने चाहिए और आपको बनाते रहना चाहिए। तो बस मेरा मानना ये है कि वेट यहाँ पे लगता है आपका नेटवर्क थोड़ा हाँ कम हो गया तो हाँ जी। हाँ अभी आ गया। मैं कह रहा हूँ मेरा मानना ये है कि इतने सालों में ना मैंने अलग अलग तरीके की चीजें करी हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में। हम्म, आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर व्हाट आई रियली एंजॉय द मोस्ट, एंड बिल्कुल knowing myself, once I start enjoying something I'll switch to something else, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहा हूँ। दैट इज कंफर्ट जोन इज नॉट माई एड्रेस। ओके। that's great, that's very interesting। और ये like I'll be looking forward to not just your films which are the three films that you mentioned, वो तीनों के लिए तो रुका ही रहूंगा, लेकिन even for a low light wedding film like I'll be looking for a scene जिसके अंदर वो डेव डी में जो wedding scene था वैसा एक wedding scene। हाँ यार वो कितना अच्छा शूट करा था अनुराग ने, कमाल है वो। वो था थोड़ा लो लाइट तो था। तो लाइक लो एंगल हाँ और सब तो फिल्म आई कि मैं लो लाइट करूंगा, मैं बोल रहा हूँ एक ना एक दिन। सी चक्कर क्या है ना, क्रिएटिव प्रोसेस ऐसी होती है दैट हर फिल्म मेकर की एक जर्नी होती है। आप उस पॉइंट पे पहुंचते हो जहां पे सारा क्रिएटिव कंट्रोल आपका हो जाता है। कुछ बिल्कुल आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से आप वेरी हो जाते हो, कुछ आपकी किस्मत बदल जाती है। मुझे लगता है कि मेरा सबसे डेफिनेटिव काम जहां पे आपको मैं सबसे ज्यादा दिखूंगा वो है जय माता दी, जो मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी। क्योंकि उस राइट उस देखिए मैंने प्रोसेस में मुझे कोई भी उंगली करने वाला नहीं था। आई जस्ट मेड व्हाट आई फेल्ट विदाउट इवन टेकिंग एन ओपिनियन फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग जो अभी भी इट्स द मोस्ट लाइक थिंग दैट आई हैव मेड। So probably after all these years, that has been my greatest learning. That if I have to fail, I will fail making what I believe in, and it should be exactly the way I want. So that is the endeavor that I can achieve that with every subsequent thing that I do. और जैसा कि मैंने बोला पैसे मिलते रहने चाहिए भाई, बिल तो देने हैं, घर तभी चलेगा। बिल्कुल 100%। Even I pinned a comment which I want to end it on that note by saying that like I'm like all these people, when I'm very happy with this interview, and I really liked that we covered so much more than just weddings, and it's just I'll be waiting to see all the films that you're a part of, and firstly I'll be heading soon, like because it was now you know that it is my birthday, so that's why I haven't got the time to watch या the कोई बात film। नहीं, see it तो and tell me how you found it. बिल्कुल मैं जरूर देखूंगा और आपको बताऊंगा। अच्छी 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 लगे तो डायरेक्टर को क्रेडिट देना, बुरी लगे तो मुझे गाली दे देना, चलेगा। अच्छी लगे कल बता दूंगा, बुरी लग गई वैसे तो भी फिर वैसे बता हमारी दूंगा। हमारी इंडस्ट्री के जो रिव्यूअर्स है उनको तो लगता है कि सारा अच्छा काम एक्टर्स ही करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि लिख के देने वाला राइटर है। जैसे वही कि एक होता मेरे है। दोस्त ने कल बोला, राइटर तो दलित है ना फिल्म इंडस्ट्री का, कि वो right। परफॉर्मेंस और लाइंस की तारीफ कर देते हैं। उनको लगता है कि डायरेक्टर एक्टर ने आंख बंद करी और उसको आ गई लाइन, वो ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि उसे लिखने वाला भी कोई होता है। हाँ, my grandmother actually thought that all those lines by Amitabh Bachchan were all Amitabh Bachchan's brainchild। so वैसे परसेप्शन थोड़ा बहुत तो चेंज हो रहा है, बट हाँ काफा तक हो ही रहा है यार। मतलब आई थिंक सिर्फ वो भी है ना दैट यू हैव टू एज अ राइटर, फॉर यू टू बी गेटिंग ऑल द प्रेज, और अ डायरेक्टर यू हैव टू मेक अ फिल्म दैट इज जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बिल्कुल तो जब तक वो नहीं होता ना, दे विल नॉट नोटिस यू द वे दे शुड, व्हिच इज ओके आई गेस। वी ऑल हैव टू गो थ्रू दैट।
And thank you so much for talking to us about your journey so far, and I'll be really looking forward to seeing your journey further on. Thank you so much. This Thank video you. shall be available on the IGTV of Ministry of Films for perpetuity. Thanks a lot, Navjot. थैंक्स अ लॉट. होपफुली पैसे लगाने वाले लोग मिलते रहेंगे और मामला चलता रहेगा. Hopefully you enjoyed this conversation as much as I I did. also enjoyed. And happy birthday to you. Thank you, Navjot. Thanks a lot. सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पार्टी करना. चलो बाय. हाँ, कल रात को वही कर ली.